यस बाहर का भी देता कैमरा ऑन कर। जवाब भी नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा जवाब 4-4 5-5 बार हो जाता है। इसमें कुछ हमको लगता है कि रहा होगा। उनको बार-बार हम फोन कर रहे हैं। ओके सॉरी, लेकिन हमको लग रहा है कि हमें कैसे दिया वो जवाब नहीं दिया बस और आज वो बहुत बिजी होती है।
बात या मैसेज आ रही है बात आई हैव मैसेज हाँ आई हैव मैसेज मेरा स्टाफ नहीं वहाँ अगर किसी भेजोगे तो वो दे देगा वो अपने है 1-2 बजे हाँ हाँ नहीं हम तो वर्कशॉप में हैं सफाई हाँ बेहतर हाँ बेहतर क्योंकि हम यही कलेक्ट कर लेते हैं फिर आपको बुलाते हैं पहुँच गए हो सुनो ना मुझे ब्लॉग मेरा है ये क्या वहीं पर आ जाएगी ये लेकिन घर ही में कितना बजे पहुँचेगी बोल देंगे है ना और ये नेहा में से मुझे छोड़ दे इस बात रखनी नहीं है सामान भेजना है वो वहाँ आएगी कितने बजे हम बोल देंगे ठीक है नहीं जब वो स्टार्ट हुए थे उसी समय हम लोग नहीं हम लौट ये आपकी नहीं ऐसे भी आप ही तो जाइएगा तो सवाल आता ही लगेगा हाँ हाँ नहीं हम 10 बजे 9 बजे लौटते हैं किसी का किसी का फंक्शन है तो नहीं आ पाता नहीं आ जाके मिल के शादी भी सैटरडे संडे हम लोग ये आज दिन नहीं है कल कुछ नहीं सैटरडे संडे हरी जी जी सर हाँ क्या हाल चाल
जैसा बोल रही हैं शुरू वहीं पे काम हो रहा था, उसको रिलीज किया जा रहा था। Check. Hello. तो नीचे करो, मिनिमम 1 करो और मैक्सिमम 5 करो। 1 5 just telling the arrows, na? Just tell him where put. We are going to start our OT. Audience is there? Am I connected, Dr. Neelu? Nice. Yes, ma'am. Okay, so today we are starting our first case. She's a case of previous 2 cesarean sections, and she is for TLH with bilateral salpingectomy. So if you can see the external camera dikh raha hai? So you can see we start always at the Lee-Wines point, our primary point, see between the umbilicus and the xiphisternum. Anywhere in between, you know that the only structure which comes in is the falciform. So what we are going to do is, we are going to put a direct trocar entry. We give a 10 mm incision, ye le lijiye. 10 mm trocar do please. 10 mm trocar do please. We're just getting settled. This is the first case, so if the whole team is unaware of how we are doing things, but from the next case they'll all be fine. Your OT team is very good, Dr. Neelu. They are doing a good job.
सक्शन कनेक्ट कर दीजिए फ्लोर पे जो है, इधर दे दीजिए सक्शन टिप। If you see how I'm putting the trocar, I put it in the well of the incision, and after putting it in the well of the incision, I lift this part up and go perpendicularly down, and I'm in. Gas on, head low. अरे भाई गैस ऑन कर दो प्लीज। फ्लो रेट मैक्सिमम, फ्लो रेट मैक्सिमम प्लीज। हेड लो, सर may I have head low please? ओ 14 पे करो और मैक्सिमम फ्लो रेट पे करो, जितना मैक्सिमम फ्लो रेट पे। सर प्लीज यार, सर प्लीज कोई जिसको फ्लोर पे पता उसको बताइए। हाँ बस, हेड लो दीजिए। इज द विजन क्लियर इनसाइड? हेड लो दे दीजिए प्लीज। यस मैम। किसी को पता है हेड लो कैसे करते हैं? प्लीज कर दीजिए। 5 mm ट्रोपर्स, थोड़ा जल्दी करो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। एनेस्थेटिस्ट को दिक्कत नहीं है, मुझे दिक्कत नहीं है। We have a wonderful anesthetist here, and you can see this. This is और जितना आप हेड लो देंगे उतनी जल्दी मैं सर्जरी खत्म करूंगी बस। So what you can see is this is previous to cesarean, and you can see how these bands. I'll just show you and explain something to you. ये पकड़ो। So when you're putting your secondary trocars, you see the inferior epigastric and just go lateral to that. Down. So I have my wonderful fellows who are assisting me. They नहीं वो disposable वाला देना बेटा। Dr. Pooja is there. She is doing her fellowship with me. Dr. Suchi and Dr. Tanisha, all three are here. एक और वो मेटल वाला ही दे देना, लाइट केबल टू द लेफ्ट। नाइफ पूछा ये मत करते रहना प्लीज, क्लीन करके आओ एक बार, इसके बाद तुम वापस बाहर नहीं निकलोगी। किडनी ट्रिम लेना, चलो। नहीं कोई बात नहीं, अब हो गया किडनी ट्रे का काम। पूछा एक बार क्लीन करके आओ। ग्रास पर दे दो, गैस का प्रेशर बढ़ा दो। ये फ्लो रेट बढ़ाओ ना, ये फ्लो रेट मैक्सिमम करो। फ्लो रेट, ये प्रेशर कंट्रोल्ड है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओवर इन्फ्लेट नहीं होगा बस। मायामस्टू दे दीजिए, टूथ ग्रास पर दीजिए, टूथ ग्रास पर दे, सच्ची तरह, ठीक है। फुट मेरे पास दे दो। एक बार ये बीच में घड़ी घड़ी फील्ड खराब कर रहा है ना, इसको क्लीन, इसको निकाल देते हैं। अरे लेग नीचे करना था। हाँ चल निकल जा। अभी डी वॉश मत हो, अगर चाहिए होगा तो मैं तेरे को ग्लव्स पहना दूंगी वापस, ठीक है। इसको सब मालूम है। और ठीक है, नहीं बस यही चाहिए। सो ये छोटे से एडिशंस है, ये निकाल देते हैं। एक्चुअली ये लेग की पोजीशन की वजह से ऐसे हो रहा है, विल जस्ट गेट एडजस्टेड। हो गया। ये क्या है, कुछ हो सकता है उसका?
यहाँ से. Sorry, just a second. Hajra? Hajra? Sorry, we're just getting adjusted with the flow. ये यहाँ पे मेरा हाथ अटक रहा है, इसको थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं? इसको थोड़ा सा 2 नखले पीछे कर दो, मेरा ये अबीजन निकल जाएगा, फिर मेरा हाथ नहीं जा रहा वहां पे. कोई बात नहीं, रहने दो, ये अबीजन वैसे भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सब नीचे ही इम्पोर्टेंट है. हो गया? Sorry, my hand is getting stuck and I don't want to put an extra trocar, that's all. Perfect, thank you. आपका नाम क्या है? Sunil is a wonderful OT assistant here. He is the one who knows everything about this OT. चलो, ये perfect position है. Next case से ऐसे ही डालना. अच्छा, उसीलिए. So now what I was trying to show you, ग्रास पर दे दो. पकड़ो पोट. What I was trying to show you is that you can see this. First always start by inspecting the anatomy. You can see the anatomy here, how it is. She's got endometriosis also. She's got this tubes and ovaries are like this. These bands, so we can see she has a cesarean scar defect. This is called an isthmosele or a cesarean scar defect. So these two bands which you can see, this band and this band. Is the audience with me? Can they understand? Yes. So these two bands are the bands which will show you where the isthmosele is. If I do a hysteroscopy in her, we will find a defect, a cesarean scar defect, which is this. So this girl must be coming with suprapubic pain and continuous bleeding, spotting. Post-menstrual bleeding is classical in them. Can you see the isthmosele? Yes, we can see. So this is the isthmosele, and if she wanted future fertility, we would have excised this area and repaired it. Ma'am, are you using the uterine manipulators also? No, I don't use any uterine manipulator. So the sunrise method is slightly different from the normal method. Center में bipolar डाल दीजिए, in which we do one side completely. तनिषा पकड़ो. Bipolar डालिए center में, पोट निकालो इसको बाहर. Bipolar डालो, शाबाश. फुट मेरे पास कर दो दोनों. फुट मेरे पास दोनों पकड़े. भाई मैंने जैसे रखा था वैसे. इसको टर्न करो. हाँ बस. हाँ, thank you. So we always start by taking the tubes also simultaneously. Now it will become easier. बेटा एक मिनट. फुट मेरे पास कर दीजिए प्लीज. जो भी फ्लोर पे है. Thank you. So we do a risk-reducing salpingectomy. Today we know that the serous cancers of the ovary start from all the epithelial cancers, serous ones start from the tube. Hence we do a risk-reducing salpingectomy so that she doesn't have a CA later. Everybody needs their ovaries, and today we don't take out the ovaries even in postmenopausal women, because we know that some function will continue regardless, and we do not want her to have issues with bone health, heart health, all that. In India, hip fractures are more dangerous, and that is why we want that their estrogen should be there. After the 100 women trial and nurses study, people are very scared of giving HRT, though I give it very freely. But what you can do is, you can very happily smoke out करो थोड़ा. Ma'am, do you routinely go for direct trocar entry? Always. All my fellows also have learnt like that. Everybody does direct trocar entry in sunrise. Today there is a good study. It's an RCOG study. But आप सीधा पकड़ो ना कैमरा. Horizontal, round ligament horizontal रहेगा, है ना? फुट थोड़ा मेरे पास हो जाएगा, प्लीज. हाँ, मेरे पास कर दीजिए थोड़ा सा. Thank you very much. Now I'm comfortable.
So now that you've done this, you've cut the round ligament and you've cut this. Now you go down and take the posterior leaf of the broad ligament. This is the uterosacral. So this will be your direction from the round ligament to the uterosacral, like so, over here. Okay. On the other side, I think I'll dissect and show you, or in the next case, I'll dissect the lateral pelvic wall and show you once. Here you have to be careful of the uterine. So just open the peritoneum, go in and cut the round leg. You can see this is a case of endometriosis. You can see this puckering over here. So she must be having that pain also. Can you see this? Yes, ma'am. This is all white endometriotic deposits. You can see the ureter going in here. So these are the areas where you will be having some issues. You can see nowadays all the energy sources, harmonic has been replaced completely by Allen because of the recurrent costs. Allen is more cost effective. आगे आ जाओ, anterior fold देखने दो, पकड़ो, retrovert करो, खींची, retrovert, yes, that's it, push it down, yes. So now this comes the most important part in this dissection, which is the bladder. Tooth grasper दे दीजिए please. So here already we know that there is a isthmocele also. So we will start with the lateral window technique. पूछा क्या हो गया? You're not comfortable? एक बारी उनको एक स्टूल दे दीजिए, एक स्टूल दे दीजिए मेरे असिस्टेंट को, बेचारी गिर रही है.